इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Back in terms of what is going on, in terms of essential, non-essential categorization that we have done, in terms of the letters of credit, जो LC confirmation का जो spread है, forget about the CDS, right? Because CDS, in my humble opinion, is not reflective because it's not traded and it's not has the depth where you make CDS a meaningful benchmark. But the reality is कि जो LC confirmation है वो तो real time है ना, क्योंकि वहाँ आपका जो country risk है वो reflect होता है. And it had gone up to 500, 600 basis points and it's down now below 100 basis points, although as I said I'm out of the industry for a while, but that's what I understand at this point. So I think it's important कि जो भी interest rate में कमी हुई है और बाकी जो सारे measures हैं वो आपके सामने, I don't want to get into that, but I did want to mention the 3 rating agencies now aligned, which is very critical for us because next week, along with the Prime Minister, I'm in China, and we will again bring up the discussion of where we want to go in terms of going back into the international capital markets, starting with the Panda bond. And so I think that's going to be, and we are very hopeful that before the year is out, we can do the inaugural issue. और अगर इसी तरह रेटिंग एजेंसीज और स्प्रेड्स और जो हमारा the possible rate that we can get in the international capital markets, we continue to move in that direction. We can look at other international capital market issues, including GMTN, during this fiscal year. If not, then we will look into the next fiscal year, because the last thing we want to do is to set up a wrong benchmark in terms of the sovereign issue. The second thing I just want to mention, मैंने हमेशा उसकी बात की है around the macroeconomic stability और बाकी हम जो चीज़ें कर रहे हैं और structural reforms में 1 मिनट में आऊँगा. But as we speak, one of the existential threats, which is climate change, is playing out in this country. और आपका भी एक discussion point है ESG. This is not an academic discussion anymore. We are living it day in and day out. Even before the unfortunate events happened in GB and northern areas, यहाँ जो इस्लामाबाद में हुआ है, and now of course this is being played out in Punjab as we speak. So this is not something which is academic in discussion anymore. And so मैंने 2 चीज़ों की बात की थी पिछले साल as soon as I took oath, 2 existential issues, population and climate change. And now we are sort of going through that. तो उसमें आप लोगों की जो help चाहिए, जो financing की बात है, उसमें जो investable, bankable projects की बात है, this is all where you can help, support, assist the government and the private sector to come up with those investable, bankable projects. और जो financing, funding, I still keep on saying that कि जब हम 22 की फ्लड्स की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने बात की थी कि $30 बिलियन का जो है वो नुकसान हो गया है, और इस वक्त हम बात करते हैं कि $20 बिलियन, $30 बिलियन, and we talk about billions of dollars in terms of the gaps in which we need them. जो है उसको तो इस्तेमाल करें, because 22 flooding led us to a number of human loss, because that cannot be measured or put in a dollar term or a rupee term. उस वक्त भी 100-125 लोग we lost. And now, as the chairman NDMA said, in the last few weeks we have lost more than 800 lives. That is how this thing is galloping. तो इसमें आपका अगेन
all the practitioners who are here, and I will come back to that, because the what and why debate कर करके और policy prescriptions तो इस मुल्क में उसकी कोई कमी नहीं है। जहाँ 5 लोग होंगे वहाँ 10 policy prescriptions होंगी on the what and why. The real discussion is the how part of it, and how do we execute and implement. तो उसमें मैं आपकी I would just like to submit, because this is in line with the agenda that you are discussing here, the structural reforms. So the first one, and I'll just remunerate a few, which is taxation, which is energy, which is SOEs, and then we get into the public finance, because that's also a discussion point for you here. Taxation. और प्रेसिडेंट साहब, मैं आपकी भी खिदमत में मैं ये सबमिट करूँगा कि जो प्रेजेंटेशन चेयरमैन FBR ने आज से 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले एम्बेसडर्स को दी, in terms of the transformation which is happening, not going to happen, is happening in FBR in terms of people, process, technology. That happened to the diplomatic corps. मैंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज चेंबर और डिफरेंट चेंबर्स को मैंने ये रिक्वेस्ट दी है कि आप हमें मौका दें ताकि यही जो प्रेजेंटेशन है चेयरमैन FBR आपको भी दें, एंड दैट इज बीइंग स्केड्यूल्ड एज वी स्पीक. एंड आई वुड मेक द सेम रिक्वेस्ट टू यू कि ICAP के फोरम से भी आप उनकी जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो आपको डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज और इसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल है ऑब्वियसली इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसमें जो प्राल में और जो भी हम उसको कहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है स्टार्टिंग विद द बोर्ड लेवल, is a private sector person who's chairing the IT arm of the FBR. Chairman FBR is not on the board. सलमान अख्तर साहब हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट को हैंडल करते हैं और उसके CEO हैं, ही इज़ द लीड डायरेक्टर. एहसान साया साहब हैं जो दराज में हैं, ही इज़ ऑन द बोर्ड. चेयरमैन नादरा इज़ ऑन द बोर्ड. सो अब उसमें जो हम सारी आगे चीज़ें उसको लेकर जा रहे हैं from the technology perspective is where we get people from the private sector with scrum masters etc, ताकि ये जो हम बात करते हैं कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, if you have agile teams and they are delivering in terms of the tight timelines, it's the right thing to do. और उसमें आप hopefully once you get that presentation, we will look forward to getting your feedback as we go forward. और उसी में 2 चीज़ें और हैं जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगा. One is process simplification. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब जारी था. उन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए बेहतर मैनेजमेंट ज़रूरी है.